Standard 9. Good morning, madam. How are you? Fine. Are you staying at home now, beta? Please stay at home, stay healthy. Beta, in the last lecture, I have explained you about the number systems. Chapter number 1. Now, first of all, a short revision. What are natural numbers? Natural numbers are the numbers that start from 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 to infinite. Then what is natural number is being having a symbol capital N. Then what is whole number? Whole numbers are the numbers combinations of natural number plus 0. It starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinite number. Its symbol is capital Z. W. W stands for whole number. Then integers. What are integers? Integers are the combinations of positive terms, negative terms and 0. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dash to infinite. It's integers and its symbol is Z. Now again some part that what are rational numbers. This is the most important topic. Rational numbers are the numbers which are in the form of P by Q. But Q is not equals to 0. Q का value 0 नहीं होना चाहिए. So rational numbers which are in the form of P by Q. Irrational numbers which are not in the form of P by Q. जो P by Q के फॉर्म में नहीं होगा वो irrational number कहलाता है. √2, √3, √5 are the irrational numbers because it doesn't get the answers after getting all the square roots. Now real numbers, combinations of all that things are known as real numbers. Composite numbers are having more than 2 factors, like 8 is 2 into 4, 8, 1 into 8, 8 are the composite number. Number having more than 2 factors or 2 factors are known as composite numbers. And the prime numbers. Prime numbers are the numbers that comes in table, one table, in a table of 1 and itself. जो खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल्स में आता हो वही प्राइम नंबर्स होता है. Like 3, 1 into 3 और किसी के टेबल्स में नहीं आता है. 5, 1 into 5, 5. 7, 1 into 7 is a 7. So this was a concept. In the last lecture, I explained you how to find out the rational numbers between two numbers. Suppose 3 and 4. तो हम लोग ने क्या करेंगे? That जितना भी नंबर्स हमें निकालना होता है उसमें +1 कर दो. +1 कर दोगे तो automatically you get the things. Suppose find out 6 rational numbers. 6 rational numbers between 5 and 6. अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन था 6 रेशनल नंबर निकालना है between 5 and 6. So like that 5 by 1, 6 by 1 हम लिख सकते हैं. यहाँ पर कितने नंबर्स निकालेंगे बोला here n is 1 उसमें +1 कर दो. 1 plus 6, 7. 35 by 7. इसमें भी 7 से लिख जाए. 42 by 7. Now what you see? Now you see the numbers are having the same base. मतलब 35 by 7 और 42 by 7 के बीच में हमें कितने नंबर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है? 6. So we can write it 36 by 7, 37 by 7, 38 by 7, 39 by 7, 40 by 7, 41 by 7. You can see over here. So the 6 answers चाहिए. We got the 6 answers. You can multiply it with 10 also, but you can have an answer different from your friend. आपके फ्रेंड का आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, आपका आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज 3, 5 and 6 के बीच में इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं. बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट आउट द आंसर्स. ओके, नाउ I am starting exercise 1.2. Students, I am starting exercise 1.2 of your textbook. What is the first question over here, beta? The first question is
Just a minute. It was true and false. State whether it is true or false of the following numbers. Okay. First question is state whether the following statement are true or false and justify your answer. में हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और हमें आंसर्स को जस्टिफाई करना है. व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट वाज गिवन every irrational number is a real number. Every irrational number is a real number. हमें इसके बारे में बताना है. फर्स्ट. सेकेंड, every point on a number line is of the form of root m. Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Third one, every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. Students, देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? Every irrational number is a real number. क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि every irrational number is a real number? क्या इसका आंसर हो सकता है? Yes. इसका रीजन, collections of real number is made up. देखो बेटा, क्यों? Yes. रीजन, collections of real number is the made up of rational and irrational number. ट्रू है ये. इसका रीजन है, देखो बेटा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल नंबर्स मतलब होता है रेशनल और इरेशनल दोनों उसके अंदर आते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट. वही बोल रहा है कि क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल, बिकॉज रियल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है. इट वाज द फर्स्ट नंबर. सेकंड, every point on a number line is in the form of root n, where n is a natural number. क्या ये सही है कि नंबर लाइन में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे? अभी मैं आपको नंबर लाइन सिखाऊंगा तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है. So the answer is false. Reason, because no negative numbers, no negative, this is number beta, just what form? A real number. No negative number can be square root of any natural number. The answer is false. रीजन क्या है? बोलता है रीजन क्यों है? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो है ना वो नेचुरल नंबर्स में हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर रूट कभी भी नेचुरल के फॉर्म में नहीं होता है. नाउ एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. कि क्या हर रियल नंबर इरेशनल हो सकता है? नो. रीजन, रियल नंबर्स अगर हम लोग लेके चले 2 तो 2 इरेशनल नहीं है, रूट 2 इरेशनल है. फॉल्स. रीजन, फॉर एग्जाम्पल
2 is an rational number and it is not an irrational number. उसका रीजन है क्योंकि 2 जो है मैंने बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q. हम लोग 2/1 लिख सकते हैं. We can write 2/1. It is in the form of p by q. तो वो हमारा रियल नंबर्स बन सकता है. मगर यहाँ पर बोल रहा है कि हर रियल नंबर्स क्या इरेशनल हो सकता है. इरेशनल नंबर्स मैंने बताया था विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q. मतलब तो ये p by q के फॉर्म में है. That's why the answer is false. Okay, you have understood about the true and false with the concept part. Now I am explaining you about the representations of numbers on a number line. Students, this is the most important topic. You have to represent an irrational numbers on a number line. You will be given a question to find out, represent root 2, root 3, root 5 on a number line. Like that you will be given. Suppose a question, but before that we will discuss question number 2. Are the square roots of all positive integers is irrational? क्या कि square root of all numbers is irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. बेटा no. उसका रीजन है रूट 4. अगर रूट 4 इरेशनल है, रूट मतलब इरेशनल, रूट 4 जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है 2. इट्स ए रेशनल नंबर. सो every square root of positive integers is not an irrational number. Like root 9 root 9 irrational, but जब root 9 बाहर निकलता है रूट से it become 3 and 3 is an rational numbers. This was question number 2. Okay, now I am explaining you represent root 5 on a number line. One of the most important topic. But question is over here. Represent root 5 on a number line. देखो बेटा रूट 5 के लिए कुछ बेस थिंग्स होता है. Every time this type of questions work in a right angle triangle. जब भी right angle triangles होगा तो we will have to study about the Pythagoras theorem. What was Pythagoras theorem? In a right angle triangle, the square of the longer side is equals to sum of the squares of other two sides. Square होता है longer side right angle triangle का. ये right angle होगा, ये वाला तो hypotenuse, इसको हम लोग perpendicular और इसको हम लोग base बोलते हैं. It is a right angle triangle. हम लोग हमेशा जानते हैं कि x square equals to p square plus b square. e का स्क्वायर और b का स्क्वायर का जितना भी टोटल होगा वो x square के बराबर आ जाएगा. They are also be known as Pythagoras triplets. But it was easy for the rational number. But how to represent root 5 on a rational number? So there are certain ways. देखो मैं आपको सिखाता हूँ. I am explaining you about the writing down the base part. देखो ये हमेशा right triangles के ऊपर वर्क करेगा. Like 1 square plus 1 square equals to root 2. Every time you will have the perpendicular one. Root 2 square plus 1 square equals to root 3. This is base, this is perpendicular, and this is hypotenuse. Two square plus 1 square equals to root 5. 2 का स्क्वायर 4 plus 1 5. रूट ओवर ले लेंगे root 5. Then root 5 square plus 1 square equals to root 6. Like this way we will move on. Now सबसे पहले ये हमारा बेस पार्ट के लिए होता है. How to get a tree? अगर आपको बोला जाएगा कि represent root 10 on a number line,
√10 मतलब होता है 3 square plus 1 square. You will get in the case. √17 मतलब 4 square plus 1 square. This is the way of getting order. अब मैं आपको समझाता हूं कैसे. I will explain you two questions, √5 and √2 on a number line. Represent √5. So we will draw a number scale. -1, 0, 1, 2, 3, 4. बेटा you can take out the gapping by yourself. 1 1 का gapping ले लो. I mention it over here. इसको मैं O मान रहा हूं, इसको A, इसको B मैंने कंसीडर किया. और अब देखिए यहां पर मुझे किसको निकालने के लिए बोल रहा है √5. तो हम लोग को 0 से बेस, दिस लाइन इज नोन एज बेस, नीचे का जो लाइन होता है उसको बेस बोलते हैं. तो हम लोग को ये O और B, O से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट्स. हम लोग 1 यूनिट ऊपर की तरफ, यहां से यहां तक का जो गैपिंग होगा वही गैपिंग मैंने यहां पर ले लिया. इसको मैंने C मान रहे हैं. तो BC equals to 1. मैंने BC 1 लिया. एवरी टाइम परपेंडिकुलर आपका हर बार 1 ही रखना है. नाउ डू यू सी अ टाइप ऑफ ट्रायंगल? यस. कैसे? आई एम फॉर्मिंग ए डॉटेड लाइन. नाउ दिस इज एन राइट ट्रायंगल. नाउ यू गेटिंग? अब देखिए कैसे निकालते हैं. 1 यूनिट. Now I'm making a triangle. In right triangle CBO. This is hypotenuse OC. Okay, right triangle 90 के ऑपोजिट को जो साइड होता है वो hypotenuse होता है. OC square equals to BC square plus OB square. OC स्क्वायर, BC का वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. OC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4. तो OC विल बी √5. ये स्क्वायर अगला का रूट बन जाएगा. तो वी आर गेटिंग द आंसर √5. मगर इसको रिप्रेजेंट हमें नंबर लाइन करना है. तो व्हाट वी विल डू, we will take the measurement. अपना राउंडर से इसका डिस्टेंस मेजर करेगा. you will keep the needle over here. आपका राउंडर का नीडल यहां पर आएगा. ये डिस्टेंस मेजर कर लो, OC का डिस्टेंस मेजर कर लो, एंड wherever it falls, ये लाइन को मेजर कर लेने के बाद ये जिस जगह पर गिरेगा this will be √5. O और C का डिस्टेंस विद योर राउंडर. अपना राउंडर से, राउंडर का डॉट और पेंसिल का डिस्टेंस मेजर कर लो, हाइपोटेनस. और वो जो डॉटेड लाइन ये जिस जगह पर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा इट विल बी 5. तो दिस इज द वे ऑफ गेटिंग द आंसर. अगर हम इसको D लिखें तो लिख सकते हैं therefore OD equals to √5 on a number line. O और D का जो डिस्टेंस है वो √5 आ जाता है. सी क्लियर. फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूं. Okay, I'm explaining another question. Represent √2 on a number line. Suppose अब √2 बोला जाएगा. I'm writing √2 on a number line. This one. Again, we are drawing a number line. It's -1, 0, 1, 2, 3. अगेन नेमिंग. इसको हम लोग O, इसको A, इसको B मान रहे हैं. तो लेट OA इक्वल्स टू 1 यूनिट. OA का बीच का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का.
we will draw 1 unit up. मैंने बताया था every time perpendicular आपका 1 ही रहेगा. It's 1. This is C, मतलब AC equals to 1 unit. Up, now you can see over here, this is an triangle. Like earlier, इसको हम लोग join कर रहे हैं. Now it becomes a right triangle. Now we are using in right triangle CAO. OC square equals to AC square plus OA square. Hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. OC will be root over AC का value is 1. OA का value is 1. So therefore OC is 1 plus 1. Okay, 1 का square 1, 1 का square 1. OC will be root 2. OC का वैल्यू हमें कितना मिल गया? रूट 2. यहाँ पर इसका वैल्यू हमें रूट 2 मिल गया. नाउ आई एम वैल्यूइंग, मैंने राउंडर रखा, पेंसिल रखा, इसका डिस्टेंस मेजर किया और ये डिस्टेंस जहाँ पर फॉल होगा, wherever it will fall on a number line, this line will be root 2. ये जिस जगह पर फॉल होगा वो मेरा रूट 2 हो जाएगा. अगर आपको रूट 3 बोलेगा तो रूट 2 तक हम लोग आएंगे, फिर 1 सेंटीमीटर और फिर डाउन होगा, वो फिर रूट 2 बोलेंगे. यहाँ पर बेस हम लोग का रूट 2 लेना होगा. So this is the way to take out the number on a number line, irrational number on a number line. Root 2, root 3, root 5, these are the maximum questions that have been asked in the examination part. But suppose you have been given represent root 4 on a number line. Beta, this is the simplest one. Root 4 मतलब 2. 0, 1, 2. इसी को हम लोग रूट 4 भी बोल सकते हैं. तो रूट 4 मतलब क्या होता है? वो निकल जाता है. That's why you know कि रूट 4 be a irrational number, but when it taken out becomes rational. Rational numbers which are in the form of p by q. Hope you have understood the topic. Thank you everyone.